Everyone, good evening. Welcome to F&OP Charcha. Today's topic is naked option buying psychology. So ऑप्शन बाइंग के ऊपर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. अपने साथ मिस्टर अमित ललवानी है. He is a full-time option trader. He is a full-time trader, passionate about options, and he's a option buyer. And he's as a BTech graduate, and he's on a mission to make option traders Atmanirbhar. Okay, it's very interesting, right? And let's learn today about naked option buying and psychology and how to buy and what is this winning setup. Welcome, Amit, for today's F&OP Charcha. Thank you, Manas. Thank you, Peter, for having me on board and giving this opportunity. Yes, great. So, welcome. And along with me, Manas also here. He's a product manager. He also asked some question to Amit, and I also asked some question to Amit. We'll make it more interactive. And if you guys have any questions, please drop a message here or send me as a DM, and I will try to ask those questions in between of the session or end of the session. So welcome you all. Manas, welcome to the session, and all welcome to the session. Yes, let's start with the discussion. I think Amit, how did you start your journey? आपका जर्नी कैसे स्टार्ट हो गया? आपको क्यों लगा कि ऑप्शन बाइंग करना चाहिए? ये जर्नी कैसे स्टार्ट हो गया? एज ए बीटेक आपने जॉब छोड़, आई होप आप कोई एमएनसी में काम कर रहे थे, राइट? वहां से आप जॉब छोड़ के फुल टाइम ट्रेडर बने. So how was this journey? Yes, I think this is very important for me to explain all these things. My association with, am I audible? Yes, yes. Okay. My association with market is since 2007. Those were like college days. I was studying engineering. I was in the third year. And as they say, 2002 to 2007, that was the bull market. And I was the fresh entrant of that bull market. So stock prices were rocketing up. Those were the days of ADAGs and Suzlons and JP Associates. Every 3 months, stock used to double. So that attracted me to stock markets actually. And then that was just the beginning. I used to read Economic Times and see the stock prices and everything. And then came 2008. And I graduated in 2008 and I joined TCS, Tata Consultancy Services. And then I started earning some money. So since I used to get some money as a salary, I started investing. And 2008 was like a financial crash. So as we call it, beginner's luck or anything else, I started getting money from the market. 2000 to 2011, I made good amount of money in those 3 years. But then again, as the psychology goes, I started thinking like I'm so young and I'm earning so much from the markets. ये market तो अपने पे ही चलता है ऐसा वैसा. And then came 2011. In 1 year, 2011 to 2012, I lost everything whatever I earned in 2008 and through 2011 in those 3 years. Then I lost everything. Then there was a confidence, नहीं मैंने तो कमाया था 2008 to 11 में, तो मतलब वापस कमा लेंगे. Then I started revenge trading. I started borrowing money from friends. I started taking bank loans. So 2012 to 2016, all the things went into like I borrowed from friends, borrowed from bank, and I lost huge amount of money from the market. So that was the revenge trading. I made so many mistakes. I spent so many sleepless nights. And then 2017, I took a complete break from the market. 2017 year was a no trade zone for me in the market. Then came 2018. I don't know how, but there was something inside me that said, no, you can do it, you can do it. Then I started fresh with only 1 lakh capital. And then 2018, 19, 20, 21, 22, last 5 years, I have been successfully doing option buying, option trading. And in all those 5 years, not in a single financial year, I lost the money. I always earned in those 5 financial years. So this is my journey in the stock market. अमित, आपने अभी बताया कि बहुत बड़ा लॉस किया था, आपने लाखों में लॉस किया था, फ्रेंड से बोरो किया, सबसे आपने पैसा लिया. तो आपके ऊपर एक मेंटली एक बहुत बड़ा प्रेशर भी था और घर से भी आपको बहुत सारे प्रेशर रहेगा. तो आप 2017 में सॉरी 18 में आप कैसे वापस आए मार्केट पे? आपने वो टाइम पे पूरा वो लोन्स पूरा वापस दिया था क्या सबका?
No. I never repaid those loans because I didn't have that much of money. So I mean, I really got a good support from my family and my friends. And basically, 2017, 2018, basically, I mean, to be frank, we went to Harkidun. It is a place in Himalayas, Uttarakhand. So we went there for 5 days for a trekking. So we were completely disconnected from the outer world. No network on the phone, nothing. I don't know, वहाँ पे कुछ दिमाग में आया, and then I came back to Pune and I again started it. So this is how I started from 2018. But yes, you said it very rightly. There was huge pressure from family, from everybody, from outside world, and that's why I say those 4 years were like sleepless nights for me. And I'm talking to people only because they should not do those mistakes which I did in 2012 through 2016. And I want to say, I mean, what mistakes I did and what I did to recover them. Right. That's true. All the audience, he lost or money in a 7 digit. I don't want to disclose that amount, but that is in 7 digit. That's a big money he lost. Means that he taken a loan and all, but he paid everything, and he's later he earned in crores. And that amount also, I know he has given a proof also to me. Okay. Anyway, Amit, you do only option buying? Do Yes. you do option selling also? No. In my entire career, I never did option selling. I never ever hedged a position. I am a naked option buyer, complete total option buyer. No selling, no writing, no hedging, nothing. And I believe, I mean, option buying, option buyers, those who are option naked option buyers, they have a complete edge in the market. I'll Right. explain that in the later parts, but I mean, I strongly believe that. Right. मैंने भी ऐसा सी मैं मल्टीपल टाइम्स स्पेसेस पे मेंशन किया है कि ऑप्शन सेलिंग करना थोड़ा सा इजी है कंपैरेटिवली आपको थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट किया तो ऑप्शन बाइंग करना बहुत मुश्किल है ऑप्शन बाइंग सब कोई करके बहुत पैसा कमा रहा है मींस ही इज ए जीनियस अल्टर जीनियस बोल सकता है सो माय क्वेश्चन इज यूजुअली पीपल से बाइंग ऑप्शन इज बेटर ओनली इफ योर कैपिटल इज लेस मीन्स आपका छोटा कैपिटल है 1 लाख 2 लाख का कैपिटल है तो ऑप्शन बाइंग कर सकता है नो प्रॉब्लम बट आपके पास करोड़ों का कैपिटल है लाखों का भाई 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ का कैपिटल है और उसके साथ आपको ट्रेडिंग स्केल अप करना है देन ऑप्शन बाइंग थोड़ा सा रिस्की लगता है ऑप्शन सेलिंग सॉरी रिस्की लगता है तो ऑप्शन सेलिंग में लोग जाता है मोस्टली मैंने बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू किया है सब लोग ऐसे ही बोलता है कि मैं इसलिए मैं ऑप्शन सेलिंग पे जा रहा हूँ क्योंकि प्रोबेबिलिटी ज्यादा है एंड दोस थिंग्स so what is your thought on this? Okay, so basically, what I believe most people are option buyers because it needs less capital. You are very correct. But then my take is different on this. I am into option buying because there is huge risk reward. और ये किसने बोला है कि आपके पास जितना पैसा है जितना कमाया पूरा के पूरा ही डाल दो? No, because in option writing basically people expect three to anywhere between 3 to 5% returns per month, and there is huge risk involved. Sincerely, I don't know anything about option writing, so I'll not comment anything. I'll come to option buying part. Option buying, what happens is you don't have to put entire your amount because there are some hacks. You can have your risk defined. आपका risk defined रह सकता है. किसी का 1 लाख, किसी का 50,000, किसी का 5 लाख, किसी का 10 लाख, किसी का 50 लाख. So you can have your risk defined. उतने पे ही ट्रेड करो. वो ट्रेड कैसे कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, और उसमें रिस्क रिवॉर्ड कितना रह सकता है, that I can explain. So basically, for my take is not like you can grow heavily through option buying. That is because you can have multiple. आप expiry के दिन if you can multiple your trading amount in 2 and 3 times, nothing can beat it. कोई नहीं दे सकता इसमें. That is true. ऑप्शन बाइंग में एक अनलिमिटेड प्रॉफिट का एक ये भी है अपसाइड भी होता है दैट इज ट्रू अनलिमिटेड प्रॉफिट सो अभी एक रिटेल पर्सन ही वांट्स टू स्टार्ट फ्रॉम ऑप्शन बाइंग एक ट्रेडिंग करना है तो एक मिनिमम कैपिटल क्या होना चाहिए कई लोग बोलते हैं 5,000 10,000 बट आई डोंट बिलीव इन दैट बिकॉज देयर इज सम ड्रॉ डाउन एक ड्रॉ डाउन बोल के कॉन्सेप्ट भी होता है कि लॉस हुआ तो उतना मेरे पास बैकअप होना चाहिए सो आप क्या बोलते हैं एक मिनिमम कैपिटल कितना होना चाहिए टू स्टार्ट विद द ऑप्शन बाइंग
See, I believe there is nothing like no concept like minimum capital. What I strongly believe is those who are new, very new into the market, very new, इसका मतलब जो 1-2 साल से option trading कर रहे हैं, I call them new. I don't call them experienced. Those who are trading in the market since last 1-2 years and still not able to make money, I can say use that much capital which will not disturb your peace of mind. आपको रात को नींद अच्छी आनी चाहिए, उतना ही कैपिटल लेके आओ. It can vary from person to person. It can be 50,000 for someone, it can be 1 lakh, it can be 50 lakh for someone. So get that capital in, divide it into 4 parts. उसको 4 पार्ट में डिवाइड करो. Suppose I consider 1 lakh amount, 1 लाख लिखा है, उसको 25-25 हजार में 25,000 में 4 पार्ट्स में डिवाइड करो. Then use that one portion 25k for the trading purpose and बाकी जो 3 portions है keep it as a backup. See, option trading में, option buying में you have to be very very strict on your decisions, very very disciplined. तो वो 25,000 में you use those 25,000 and do the trades as per your setups and putting strict stop losses. कंसिडर 25,000 ने आपने ट्रेड किया, आपने उसमें कुछ स्टॉप लॉस लगाया, आपको उसपे फर्स्ट ट्रेड में आपको कुछ 5-10,000 रुपीस मिले, 25,000 का 35,000 हुआ, देन यू विथड्रॉ दैट प्रॉफिट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, लिसन टू दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. वो प्रॉफिट विथड्रॉ कर लीजिए. अनलेस यू विथड्रॉ योर प्रॉफिट, मार्केट इज गोइंग टू टेक इट बैक and do the next trade on only 25 again. Don't increase your risk immediately. वो 25 का 35 risk करो मत, वो प्रॉफिट निकाल लीजिए. And every quarterly you review your positions, आपका प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है. इन केस ऑफ द लॉसेस, अगर वो 25,000 के स्टॉप लॉस हिट होते हुए वो 10,000 तक आ गया, तो जो बैकअप है उसमें से 15,000 निकाल के वापस 25,000 तक लाओ. इससे होता क्या है, you stay in the market for longer period of time and see, market तो रोज रहने वाला है. Capital preservation is the most important thing for the option buyers. Market रोज है, अगर हम लोग survive करेंगे तो market रोज है. Market is not going anywhere. Every 10 year there is a 10-year cycle in the market. Every 10 year there is a major financial stock market crash, like 2008 it happened, 2020 it happened, then 2000 there was a crash. So on an average 9-10 years there is a crash. So hota kya hai, 80% of the old traders they get out of the market and it is refilled by new traders, new 80% traders. तो market कहीं नहीं जा रहा है, हम लोगों को यहाँ पे टिकना है. The longer you stay in the market, there is a big probability you make larger money. So this is the way new traders can come in and use their capital. In short, use that much capital which is not going to disturb your peace of mind. See, after all, हम लोग क्यों कर रहे हैं सब? पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं. And unless you hello, Yeah, Amit, I can hear you. yeah, unless you are very very mentally and physically fit, you do not do anything. So bring in that much capital which is not going to disturb your peace of mind. This is my trick. So Amit, I have this question like कि option buying is mostly about being perfect with the direction and view. ये होना बहुत जरूरी है, and like 60 to 70% of the time market या तो opposite view में रहेगा या फिर like it is range bound, so which is favorable for option seller. ये points को रखते हुए like how can one try option buying? Like the option seller में ये चीज ज्यादा रहता है, so how to negate that from the buying point of view? Sorry, your question is like 70% of the times market is range bound. That's your question, right? Yeah, Abid, if I'm not wrong, इसका थोड़ा सा voice cut हो रहा है Manas. I will explain what I understood. He's saying like 70% of the time market range bound में होता है. तो क्या होता है कि ये तो obviously range bound में है, तो option seller के लिए बहुत तो advantage है option selling करना. But 30% of the time ही 30-35% of the time ही market थोड़ा सा क्या बोलता है bullish or something, right? Range थोड़ा सा आपको trending मिलेगा. तो आपका game पूरा trending में है option buying का. Yes. ये 30% का एक सक्सेस रेशियो लेके आप कैसा कर रहे हैं वो? हाउ डू यू थिंक ऑप्शन बाइंग इज बेटर? Okay, I got your question now. So basically, see, option buyer के लिए वो 30% is more than enough. This is what I feel. And the next thing is, see, market every day gives humongous opportunities. I mean, there are certain things
which I'll explain. Like when VIX, that is volatility index, we call it fear gauge. When market has low VIX, it is trending market. When there is a high VIX, it is a volatile downtrending market, but volatile. So what happens is when I have developed some strategies, when market is trending and VIX is low, then you have to kill it, go for it completely. And when there is a high VIX and volatile market, then there is a thing called scalping. You don't have to buy at 9:15 and wait till 3:30. ये करना ही नहीं अपने को. वी आर इन द मार्केट बिकॉज हम लोगों को फ्रीडम है टाइमिंग का फ्रीडम है. हम लोगों को 9:15 को बाय करके 3:30 को सेल करना किसने बोला है? इतना देर करना ही नहीं है. हाई वोलेटाइल मार्केट में स्कैल्पिंग कर सकते हैं. नंबर ऑफ टाइम्स आई डू 2-minute trades also, 1 minute, 2-minute trades also. So this is how I feel risk reward is always favorable in the case of option buyers. And again, so when markets are not trending, sideways, boring, but then again there comes a theory of relativity. I give a lot of importance to theory of relativity, because what happens is always relative performance matters. See, in the case of markets, like how global markets are performing, and relative to it, how India is performing, like Nifty is performing. If Nifty is performing good, look at the sectors which are outperforming Nifty. And in those sectors, look at the stocks which are outperforming those sectors. Like in the case of last 2 days, ITC and HULs were outperforming, and Nifty was like downside or underperforming, and VIX was very high. So there was no sense making any trade in the Nifty or Bank Nifty in last 2-3 days. So it was very obvious, go for the outperforming sector, and it was ITC HUL. So relatively every day you'll get some or other sector which will outperform significantly or underperform significantly. What we need is relative performance. So basically when there is a strong underperformance, then go for puts. When there is strong outperformance, go for the calls. So this is how I trade, and this is why I feel risk reward is usually favorable in the case of option buying. Okay. So Amit, I had one question. Is my voice clear? Yes. Yeah. So like option buying mostly ये like कि सही टाइम पे एंट्री एंड लाइक उसमें जो भी टारगेट है वो एग्जिट भी एकदम सही टाइम पे होना चाहिए, बिकॉज यू गेट वेरी लेस अपॉर्चुनिटीज. सो आपके अपना कैन यू एक्सप्लेन योर बाइंग सेटअप, लाइक how do you decide the timing for the entry, and how do you decide the stop loss, like how much risk you can take and what will be your target? So how do you go about this, like from the instrument selection, if you select Nifty or Bank Nifty or whichever stocks, to the like getting into the trade if you're doing intraday or overnight? Okay. So basically my buying setup revolves around number of data points. I give a lot of importance to these data points since all the global markets are connected to each other, and of course mother market is US market. So whatever is happening in all the financial markets in the world, everything revolves around US markets. What is FOMC doing? What are the number of factors. So basically I'll go one by one with what I decide my strategies to buy or sell, or to buy and how to exit. So basically I keep the complete check on global markets, how US is performing. Then second most important thing which I give importance to, FIIs, foreign institutional investors. I call them big daddy, and I always tell people, please follow whatever big daddies are doing, because they are not here to lose their money. They are putting in significant investment, and they are here to make money. If you follow them, then you are going to kill it. So second thing is FII data, global markets, and then my setup comes. See, I wake up around 6:30 a.m. I see whatever SGX Nifty, the Nifty which trades in Singapore, वो देखता हूँ, check करता हूँ. Then Singapore markets open. Then 7:30 को Hong Kong market opens. ये सारे जो भी global markets, I keep a close watch on them. Then I see whatever news are around. कोई news चल रहा है क्या? कोई stock में कोई news है क्या? किसमें कुछ है? Because see, we are option traders. We don't have to think beyond tomorrow. आज और कल में क्या हो सकता है, I only focus on that, because
परसों क्या होगा, वी हैव वीकली एक्सपायरी, सो परसों क्या होगा, उस पे क्या होगा, उससे आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग. So I give importance to these things. Then 9 to 9:15, 9 to 9:07, there is a pre-open market. I see which stocks are performing, which stocks are underperforming, relatively क्या news है, किसमें कैसे news है, क्या है. And then whenever market opens, again I use that theory of relativity. If our market has been trending, then low VIX also comes into the picture. VIX कैसा है, लो है, मार्केट ट्रेंडिंग है, मार्केट वोलाटाइल है. इफ मार्केट इज वोलाटाइल, देन आई गो फॉर स्टॉक्स. स्टॉक्स में भी चेक करता हूँ कि कौन से आउट परफॉर्म कर रहे हैं, कौन से अंडर परफॉर्म कर रहे हैं. एंड देन आई हरीड, आई नेवर ट्रेड हरीडली. कोई 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 जल्दबाजी नहीं है. आई कीप अ चेक, कंटिन्यूअसली चेक करते रहता हूँ. 9:15 को व्हेनेवर मार्केट ओपन्स, देन आई सी इफ द मार्केट इज स्टेबल. अगर गैप अप ओपन हुआ है तो गैप अप सस्टेन्ड है क्या. For 5 minutes, if gap up is sustainable and continuous buying is there, then I'll enter the call. And as soon as I enter any call or put, whatever it is, I keep a close watch. 5 minutes time frame में अगर वो मेरा जो भी मैंने बाय किया है वो अगर अंडर परफॉर्म कर रहा है या मेरे प्राइस के नीचे चल रहा है, then I immediately cut it. One most important thing I wanted to tell is, most of the traders, whoever I talk to, वो लॉस कभी बुक ही नहीं करते या फिर लॉस में कंटिन्यूअस वेट करते रहते हैं. दिस इज व्हाट आई हेट अबाउट थिंग्स, एंड आई वांट टू कन्वे दिस मैसेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज. लॉस में रुको मत, लॉस फटाफट काटो एंड प्रॉफिट में रुको. बट ये सब उल्टा होता है एक्चुअली. नंबर ऑफ 80% ऑफ द ट्रेडर्स डू उल्टा थिंग. दे कीप ऑन वेटिंग इन द लॉसेस विद द ऑप्टिमिज्म दैट कि नहीं अपना भाव अब आएगा, अब आएगा, अब आएगा. बट देन वो कभी नहीं होता है. यू नीड टू हैव गट. इफ यू आर इनटू ऑप्शन बाइंग, आप में गट्स चाहिए कि आप लॉसेस भी बुक करो टाइमली. आप एवरी डे यू आर नॉट गोइंग टू अर्न मनी. अगर रोज ही कमा लोगे ना तो एवरी ट्रेडर इज गोइंग टू बी मिलेनियर यहाँ पे, लेकिन दैट इज नॉट पॉसिबल. आप रोज कमा नहीं सकते. यू हैव टू एक्सेप्ट द लॉसेस. लॉसेस इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम. तो फर्स्ट थिंग आई कीप अ वॉच कि अगर वो अंडर परफॉर्म कर रहा है टू कट इट इमीडिएटली. And one most important principle I follow is one or maximum two position at a time. मतलब कोई भी मेरा ट्रेड, लाइव ट्रेड है ना, एट अ टाइम एक या मैक्सिमम दो ही ट्रेड्स रहेंगे. अगर मैंने निफ्टी में लिया है तो निफ्टी का ही रहेगा. अनलेस आई कट दैट ट्रेड इन प्रॉफिट और लॉस, वट एवर इट इज, आई विल नॉट गोइंग टू एंटर अनदर ट्रेड. तो ये बहुत ज्यादा प्रिंसिपल है. मैक्सिमम टाइम होता क्या है, आप हम लोग 5-6 ट्रेड लेके बैठते हैं इन द होप दैट कि कोई ना कोई ट्रेड चल जाएगा. बट वैसे होता नहीं. यू कैनॉट कीप कंटिन्यूअस वॉच ऑन दोस 5 ट्रेड्स. यू कैनॉट मैनेज योर रिस्क. स्टॉप लॉस आप नहीं देख सकते. सो द बेस्ट थिंग I think option buyer can do is have maximum 1 or 2 positions at a time. तो उस पोजीशन को चेक करो वो क्या हो रहा है. अगर लॉसेस में जा रहा है, Amit, you're on mute. Can you please unmute yourself? Hello? yes, sorry. Okay, तो होता क्या है, when your position goes into performing mode, तो हम लोग इमीडिएटली अरे प्रॉफिट मिल रहा है, काट डालो. बट नो, दिस इज नॉट द वे. व्हाट आई डू इज आई कीप ऑन ट्रेलिंग द स्टॉप लॉसेस. सपोज कोई चीज मैंने 30 रुपीज पे बाई की है एंड उसका स्टॉप लॉस 25 पे है, तो व्हाट आई डू, एंड इफ इट गोज टू 40 आई विल नॉट कट इट डाउन. मेरे दिमाग में कोई स्पेसिफिक टारगेट रहता ही नहीं है. I don't keep any specific target in my mind when I buy any particular thing. So what I do is I keep on trailing the stop losses. 25 का stop loss, I'll do it 33 or 34 or 35 when it goes to 40. When it goes to 50, इसमें होता क्या है, you can reap the maximum benefits of profits and और आपका स्टॉप लॉस अगर हिट हो जाए then you have exited the trade. फिर वो किधर भी जाओ, you don't have to worry about it. So this is how my setup is. But then how I pick and choose it, I mean, I think वो explain करना it is quite difficult on audio mode. But then in general, these are the things I look for. NSE के साइड पे FI डेटा I keep on checking it. उन्होंने मेजर उनका फ्यूचर्स में देखता हूँ, फ्यूचर्स में क्या किया उन्होंने. फ्यूचर्स में if they have bought, then it is damn 100% sure कि market is 90% of the time market will go that way. And then there are few things like if market Nifty or particular stock closes at their day high, then I carry the risk. If it doesn't, then
I mostly close the trade. So this is how my setup is actually, and there are some timings actually on which I make the trades. Like first 45 minutes, I believe is very important. 9:15 to 10. If you make the killing in those 45 minutes, that's good enough. If you can't do anything, if markets are very volatile, I suggest go after 2 p.m. 2 बजे के बाद ट्रेड करो, क्योंकि दो जनरली होता क्या 2 बजे के बाद काफी डीके हो जाता है प्रीमियम, एंड दैट बेनिफिट ऑप्शन बायर कैन टेक. वो डीके का बेनिफिट वो 1.5 घंटे में यू कैन गो विद द ट्रेंड एंड टेक द बेनिफिट्स ऑफ द डीके. सो दिस इज हाउ माय जनरल सेटअप इज. ओके, नाइस अमित. कई पॉइंट्स आपने बताया. आई वांट टू रिपीट दोस पॉइंट, मे बी समराइज दोस पॉइंट्स. वन इज लाइक आपको बड़ा कैपिटल होता है, आपके पास कैपिटल है, थोड़ा प्रॉफिट करता है तो आप एग्जिट करो, मीन्स आपका प्रॉफिट को वापस ले लो, आपका बैंक में ले लो, एंड मिनिमम कैपिटल के साथ आप ट्रेड करो. अभी आपने बताया कि ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के बारे में बात किया. 9:15 टू 10 o'clock के अंदर आप ट्रेड लेता है, दैट इज अनदर वन. एंड आफ्टर 2 o'clock इट्स आल्सो ए गुड वे टू टेक ट्रेड, बिकॉज वो टाइम पे प्रीमियम डीके हो ऑलरेडी हुआ है, तो आपको थीटा डीके का बड़ा इम्पैक्ट नहीं आ सकता है, राइट? यस, करेक्ट. So Amit, let's go to the strategy also. थोड़ा बहुत आप, I know that ऑडियो में अपना बताना थोड़ा सा मुश्किल है. So एक अभी मान लीजिए कि अपने निफ्टी और बैंक निफ्टी आपको ट्रेड लेना है, बाई लेना है, तो ग्लोबल फैक्टर आपने देख लिया. उसके साथ आपने और एक मेंशन किया, दैट इज आई वांट टू रिकन्फर्म. एफआईएस फ्यूचर्स में बाई किया है तो आप बोल रहा है कि वो दिन मार्केट नेक्स्ट डे मार्केट ऊपर जाने का चांसेस ज्यादा है, राइट? करेक्ट. या ओके. सो एफआईएस ने बाई किया मान लीजिए फ्यूचर्स पे, एंड ग्लोबल मार्केट भी थोड़ा सा पॉजिटिव दिख रहा है आपको, एवरीथिंग इज फेवरिंग यू. देन आपको एक ट्रेड लेना है, अभी निफ्टी में लेना है, नहीं तो स्टॉक स्पेसिफिक पे लेना है, किसी में आपको ऑप्शन बाई करना है. वो डिसाइड कैसा करता है कि आपको ये टाइम पे मुझे, ये लेवल पे मुझे, ये इंस्ट्रूमेंट में मुझे एंट्री करना है? या फिर लाइक और आपने ये पूछना चाहता था कि टेक्निकल को आप टेक्निकल एंट्री टाइम कैसे डिसाइड करते हैं? कैंडल्स देखते हैं, मूवमेंट देखते हैं, या फिर कोई टेक्निकल इंडिकेटर देखते हैं? तो विद इन अ डे व्हेन टू टेक द एंट्री, अगर आपने पिछले दिन देख लिया एफआई आर गोइंग गुड. Yes. To be very frank, I don't use charts. I only use charts for the purpose of reading the data. मैं एंट्री लेने के लिए कभी चार्ट यूज नहीं करता हूँ. I keep on checking the tickers all the time and I keep on checking the data. तो उसमें होता क्या है, अब इसमें दो कंडीशंस है. एक लो विक्स एनवायरनमेंट है व्हेन मार्केट्स आर ट्रेंडिंग एंड प्रीमियम्स आर ऑलरेडी लो. तो उसमें मैं क्या करता हूँ ना, मतलब इफ ऑल द डेटा फेवर्स मी कंसिडर फॉर द अपसाइड, then I'll enter it and I'll keep on trailing the stop losses, and this is the only indicator for me. Market is trending, VIX is low, we are relatively outperforming, FIs have bought it, so that these are all the combined things which enables me to decide, like, yes, I have to go for it and I have to buy for it. So usually my things are on Friday. I generally 99% I trade on in weekly expiry. So Friday ko I generally use 2% thing. Like if I'm trading in Nifty, 2% far calls I'll buy. So that is quite out of the money. OTM's calls I buy because I consider the decay chances, and if in the low VIX environment I'm talking this, अगर विक्स लो है तो डीके चांसेस बहुत कम हो जाता है फार आउट ऑफ द मनी केस में भी. एंड उसमें भी रिलेटिव परफॉर्मेंस चेक करता हूँ. अगर मार्केट रिलेटिवली आउट परफॉर्म कर रहा है तो दे, because lot of times on Fridays I've made like 18,000 call or 17,005 call, which is 2% far from current price. It goes like 3 times, 4 times, number of times in these circumstances. But in another circumstance, like when VIX is very high and markets are very volatile, then I'll never trade out of the money calls or puts. I'll go for maximum at the money or in the money. So these are the things which enable me. And see, if all the last night data, like US market is favorable, FI data is favorable, SGX is opening good, for first 5 minutes I'll wait and then I'll immediately buy it, and then I'll start to track it. If prices goes against me, I'll cut down the position immediately. Even if it even for that matter it is 1 minute or 2 minutes, 2 minute में भी मुझे लग रहा है ना कि position अपने against जा रहा है, I'll cut it down no matter what. And the biggest thing I think everybody should understand is have maximum 1 or 2 positions at a time. And then
according to timings. Then on Thursdays, basically Thursdays, for everybody's information, 3 p.m. move is of biggest advantage. I don't know how many of you are taking the advantage, because see, writers are sitting here to get option bias out of the market, but we have to do the opposite thing. See, it is a zero sum game. Everybody needs to understand this. 3 बजे होता क्या है ना, FIs and professional, they start their tweaking their positions. तो 3 बजे मार्केट को जब झटका लगता है ना, तब अपने को पैसा मिलता है बायर्स को. ये ध्यान में रखो ये चीज. तो 3 बजे वो शॉक देते एक्सपायरी के दिन. So whenever, first thing you need to understand, आप 2-3 expiries observe करो 3 p.m. move, do a paper trade and take a move. तो 3 p.m. move is most significant way to earn money on expiry day. तो इसमें पैसा बहुत बन सकता है अगर अच्छे से फॉलो किया तो. अमित, आपने अभी काफी चीजों के ऊपर बात किया, बट ये एक मेरा क्वेश्चन है. अभी मान लो कि मुझे अभी निफ्टी में ही मुझे एंट्री लेना है, नहीं तो बैंक निफ्टी में एंट्री लेना है, और इन स्टॉक्स पे ये कैसा मैं डिसाइड करूं? ये तो ओके, हम लोग ओवरऑल अपने के लिए मालूम पड़ा कि आज पॉजिटिव डे है, आई हैव टू गो विद पॉजिटिव, बट यू हैव टू डिसाइड किस में मुझे जाना है, राइट? मे बी एक आप प्राइस एक्शन कुछ तो देखते रहेंगे. Yes, Something price action. Yes, price action is very important. See, if all the global market they are breaking out, SGX shows it is also opening good, or gap up or gap down, whatever it is, and you see there is a price action left into it. See, what happens is you check in the money options and you check 1% out of the money options. If 1% out of the money call option is continuously giving you good price momentum, then you have to understand market is going up and it will go up. So it is a continuous momentum process. If you guys call it RSI, I call it momentum. See, whenever you are driving a car, आप गाड़ी चला रहे हो, आप 80 के स्पीड पे हो, आपको पता है, और 80 का स्पीड अगर 50 हो गया तो आपको इमीडिएटली समझ आता है. See, so this is how it is for me. When market is in the momentum, I understand it कि ये अभी 80 की स्पीड से भागने वाला है, तो I accordingly take the trade. और अगर वो 50 की स्पीड से 50 की स्पीड पे आ गया, मतलब इसका मतलब है कि डिके होने वाला है, there is going to be a theta decay, then I stop the trade. So this is how I do the things. Basically, you can check the RSI factors for that. I don't use it, but you guys can check it. नहीं, इसमें ओके, आरएसआई को देख के आप स्पीड को ओके डिफाइन करता है कि नहीं, तो अब समझ में आता है कि आपको ये मार्केट ऐसा जाएगा, Yes. राइट? तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट बीच में थोड़ा सा नीचे आ गया, स्लो डाउन कर लिया आपने, सेकंड गियर में आ गए, थर्ड गियर पे आ गए, देन तो अगेन we- आपने एस्केलेट किया. So we have the stop losses for that. Cut it down. See, I believe if you are correct 50% of the times, then you are very good. This is what I believe in options buying. बाकी 50% times तो market आपको धोखा ही देने वाला है. You are not going to be correct 100% of the times. And sometimes you need to have conviction, you need to have that belief, and you need to have your risk management system in the place. ये तीन चीजें आ गई ना. What I believe is, see, discipline, execution and timing. These three things are the most important for option buyers. और फिर ये तीनों चीजें आ गई ना एक बार लाइन में, तो आपको कन्विक्शन अपने आप क्रिएट हो जाएगा आप में. देन यू विद दैट कन्विक्शन यू विल बी एबल टू डिसाइड कि ये मार्केट कितने तक जा सकता है, कहाँ रुक सकता है. And generally market stops at the strike prices. So for the Nifty, strike prices are at the interval of 50 points. So generally वहाँ पे stop होता है. तो market का momentum देख के you always understand कि हाँ यहाँ पे रुक रहा है, यहाँ पे रुक रहा है, नहीं, this is the time to exit, निकल जाओ यहाँ से. क्योंकि क्या होता है ना, see, once you are exit, आपको किसने बोला कि वापस आप enter नहीं कर सकते? ठीक है, आपको 10% ऊपर मिल जाएगा, लेकिन ठीक है ना, उससे फर्क नहीं पड़ता. Booking profits is also very important. So if you go by the setup, you trail your stop losses, nothing to worry about. And two things, I don't keep the stop losses in the system. I keep it in my mind because I am continuously watching the screen. So those who are part-time traders, they must keep the stop losses in the system. This is very important, guys. ओके, सो आप अभी आपके पास ऐसा वाला कितने मींस एज ए ऑप्शन बायर? One more thing, sorry to interrupt. Yeah, go ahead. One more thing I wanted to discuss, like you asked me about stock selection. So stock selection के बारे में मैं वही चेक करता हूँ, how it is relatively performing with the Nifty. अगर Nifty अच्छे मूड में और वो सेक्टर भी अच्छे मूड में, तो
I take the example of automobile sector. If Nifty is good, ऑटोमोबाइल सेक्टर इज आउट परफॉर्मिंग, उसमें देखता हूँ कि मारुति आउट परफॉर्म कर रहा है कि टाटा मोटर्स कर रहा है कि आइशर कर रहा है। अगर मारुति कर रहा है तो मारुति में बैठ जाओ, कीप द स्टॉप लॉसेस। उसके लास्ट 5 दिन के वॉल्यूम चेक करो, अगर इफ इट इज ट्रेडिंग एट गुड वॉल्यूम्स देन अगेन इट इज अ सेकंड इंडिकेटर, और अगर इट इज ट्रेडिंग एट योर 5 days हाई देन दैट इज द थर्ड इंडिकेटर। अगर ये तीनों चीजें मिल जाती है तो सीट इन द स्टॉक। यस, राइट। सो एज ए ऑप्शन बायर आप अभी एंड ए फुल टाइम ट्रेडर, आप कितने सेटअप आपके पास रखा है? लाइक दिस इज द ओनली सेटअप यू यूज और यू हैव ए मल्टीपल सेटअप्स? सो पोजिशनल के लिए आपके अलग सेटअप आप यूज करता है एंड इंट्राडे के लिए अलग है, सो हाउ यू डू? See, my setups are completely defined and I'm very flexible on that. And I believe since last 5 years, if this setup has given me money, because 2018 में market अलग था, 2020 में कोविड था तब market अलग था, और 2022 में market बहुत ज्यादा अलग। But then if my same setup is working for me, then why I should change my setups? But there are number of setups. आप setups बोलते हैं, मैं उसको timings बोलता हूँ। Like जैसे 3 PM मूव है, 12:30 यूरोप मार्केट ओपन होने के बाद मूव है, एक 2 PM मूव। जनरली गाइस वन थिंग आप लोगों ने ऑब्जर्व किया है कि नहीं आई डोंट नो, बट जो 2 बजे के बाद है ना, कोई भी एनी स्टॉक और निफ्टी उसमें मोमेंटम ज्यादा बढ़ जाता है, either on the upside or downside. So you have to be very confident कि कौन सा स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है। यू चेक द डेटा, FNO डेटा, जो स्टॉक 2% 3% के ऊपर ट्रेड कर रहा है एंड इट इज ट्रेडिंग एट डेज हाई, then go for it. Because 2 बजे तक अगर वो डे हाई पे ट्रेड कर रहा है एंड मार्केट इज फेवरिंग, विक्स इज लो, then you can easily go into that stock. And this setup, believe me guys, last 6 years I'm using this setup and this has been like wonderful working magics for me. होता क्या है ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं तुम चार्ट यूज नहीं करते हो, ये नहीं करते हो, वो RSI इंडिकेटर्स। गाइस देयर आर 900 इंडिकेटर्स, आप कितने यूज कर लोगे? और अभी अगर आप सारे के सारे इंडिकेटर्स यूज करके सबका सेटअप अगर सेम हो गया, सी वी आर फाइटिंग अगेंस्ट अल्गोस, वी आर फाइटिंग अगेंस्ट रोबोट्स। आई थिंक 70% ऑफ द ट्रेड्स इन इंडियन मार्केट्स आर डन बाय अल्गोस। तो उनका होता क्या है कि सबका सेटअप सेम है, तो इससे तो 70% ऑफ द पीपल शुड मेक मनी, बट नो, दिस इज नॉट द केस। सो व्हाट वी हैव टू डू, आई थिंक आवर ब्रेन, अपना ब्रेन ज्यादा फंक्शन अच्छे से करता है, क्योंकि आपने अल्गो में वही फीड किया है ना, अपने ब्रेन में जो बोला है, बट योर ब्रेन इज फ्लेक्सिबल, योर ब्रेन हैज अ पावर टू टेक द डिसाइसिव एक्शन, स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन। तो आई थिंक ऑप्शन बाइंग के लिए दिस इज द बेस्ट वे फॉर आवर रिस्क। अगर रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, आपके पास पैसा बहुत ज्यादा है, तो फिर देन दैट इज द डिफरेंट केस। बट देन फॉर पीपल लाइक अस हु आर बिलो 50 CR, तो हम लोग अच्छे से कर सकते हैं इस सेटअप में। और वन मोर थिंग, लाइक जो भी पैसा मिलता है मार्केट से, ऑप्शन बाइंग से, कीप ऑन विड्रॉइंग इट एंड इन्वेस्ट इन सम डेड assets like gold, property or shares. I call it dead asset because they give generally anything between 8 to 15% returns. तो इन्वेस्ट देयर। अगर आप पूरा पैसा मार्केट में ही ट्रेडिंग के लिए ही यूज करेंगे, देन सम और अदर डे मार्केट इज गोइंग टू टेक इट बैक। तो ये चीज बहुत ज्यादा ध्यान में रखने लायक। Okay, yeah. Right. Good point. So, I have one question is like कि generally option sellers हैं वो around 2 to 3% profit per month, like generally they target. So, like as an option buyer, आपका like how much do you target, or like is there a pattern, or it can be like very high on for some months, and like do you have any targets for a particular month for profits? No, sir. I mean, generally, I don't target anything. What I target is being profitable, being consistent every day, which never happens. But then I target that. मेरे को बस यही टारगेट करना है कि मेरा एक रुपया मुझे प्रॉफिट हुआ नहीं तो चलेगा, बट देन मेरा 1 रुपये का नुकसान नहीं होना चाहिए। विद दिस माइंडसेट आई डू द ट्रेडिंग। और उससे होता क्या है सर, सी एज आई सेड कि जिसका उसका रिस्क एपेटाइट अलग है। आई स्टार्टेड विथ 1 लाख रिस्क, नाउ आई हैव रीच्ड काफी सारा, मतलब जो 1 डे रिस्क है वो काफी ज्यादा पहुंच गया हूं मैं। बट देन विद दैट रिस्क आई इंश्योर कि आई डोंट हैव टू बी लॉस मेकिंग कंसेक्यूटिवली। मेरा कोई फिक्स टारगेट नहीं है मंथली, बस मेरा ये है कि मुझे कंसिस्टेंट बेसिस पे प्रॉफिट बनाना है। बिकॉज सी यू कैन मेक वंडर्स इन बाइंग इफ यू आर कंसिस्टेंट इनफ। आप बस कंसिस्टेंसी पे अगर ध्यान रखोगे ना,
irrespective of profit. ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. प्रॉब्लम होता क्या है ना, वी कीप वीकली टारगेट्स, मंथली टारगेट्स, और उससे वो अगर कंप्लीट नहीं हो पाते तो देन वी डू रिवेंज ट्रेड्स. फिर फ्रस्ट्रेशन में आके कोई फटाफट हरी ट्रेड्स किया, कंपल्सिव ट्रेडिंग किया. ये मेरे साथ भी बहुत अभी भी होता है. But then I keep on working on that, or I'm still working on. See, option buying is a continuous learning process. It is not a destination, it is a journey. आपको रोज मार्केट के साथ लड़ना है, आपको रोज मार्केट के साथ फाइट करके आपके इमोशंस पे कंट्रोल करके पैसा कमाना है. So I don't keep any monthly targets. What I do is I try to be as consistent as possible. This is what I am trying to do. Amit, I think Manas has asked a very good question here. I have some takes on this. अभी क्या होता है कि ऑप्शन सेलर्स 3 to 5% मंथली एक एक्सपेक्ट करता है कि होना चाहिए, बिकॉज व्हेन यू थिंक एज ए यू आर ए फुल टाइम ट्रेडर एंड यू आर टेकिंग ट्रेडिंग एज ए बिजनेस, देन ऑब्वियसली यू हैव सम लाइक ओके दिस इज माय मार्जिन, राइट? इतना होना चाहिए, इससे भी बेटर कर सकता हूँ बट इतना करना है. इसका मतलब नहीं कि इतना करना है, बट दे यूजुअली थिंक लाइक मैं 1 crore डिप्लॉय कर रहा हूँ तो मुझे महीने में मुझे 3 से 5 लाख करना है. बट आपका केस में क्या होता है कि आप 1 crore तो डिप्लॉय नहीं करता है, क्योंकि आप कंसिस्टेंटली विड्रॉ भी कर रहा है. तो आपको रिटर्न एक्सपेक्टेशन ज्यादा होना चाहिए. तभी आपको क्या होता है कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर, फुल टाइम ट्रेडर जैसा, आपको दूसरा कोई इनकम नहीं है, रेवेन्यू जनरेशन करने के लिए दूसरा कोई तरीका नहीं है. यू आर ए फुल टाइम ट्रेडर, यू हैव टू गेट योर सैलरी बाय मार्केट, राइट? ये केस में आपको आई थिंक आप बोल रहे हैं कि मैं कोई टारगेट ही नहीं रखता, मुझे ऐसा कुछ सोचता भी नहीं हूँ. हाउ दिस इज पॉसिबल? आई बिट Okay. मींस आप और थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं इसके पे. See. अगर आप profit is a byproduct of all the disciplines, all the executions, all the timings, all the setups, all the things you follow. Profit is just a byproduct, and believe me, अगर आप you keep the profit aside, आप passionately ये चीजें follow करोगे ना, तो मैं बोलता हूँ consider your trading basic capital is 1 lakh. You can easily make 3, 4, 5, 10 times. Easily you can make it. But ये होता नहीं है, क्योंकि हम लोग इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाते, एग्जीक्यूशन पे कंट्रोल नहीं कर पाते, इसलिए ये प्रॉब्लम होता है. तो बेसिकली द थिंग इज 3 और 5% से तो ज्यादा ही होता है. बट देन इफ यू वर्क ऑन कंसिस्टेंसी तो ये मल्टीपल्स में हो जाएगा, ये परसेंटेज में नहीं होगा. सो दिस इज व्हाट आई वांट टू कन्वे. तो ये कोई स्पेसिफिक टारगेट नहीं है. सी सर, I have made 1 crore 75 lakhs rupees in one day also. एक दिन में मैंने 2.25 करोड़ रुपए भी कमाए on the capital of 55 lakhs. So that was my risk. और उतने रिस्क पे आप मतलब कर सकते हो. You need only 4 or 5 good days in a month to be profitable in multiples. Multiples I'm talking about, not percentage. तो if you work on your consistency, profit is just a byproduct. Market आपको दोनों हाथ से देगा, भर भर के देगा. राइट, ट्रू, द राइटली सेड. एंड ऑप्शन बायर है तो मुझे लगता है मुझे ऐसा लगता है कि डेली आपको ट्रेड करने का जरूरत नहीं है. नो ट्रेड ऑल्सो ए गुड ट्रेड. आप ट्रेड नहीं किया तो भी चलता है, बट द डे यू गेट द ट्रेड, दैट डे यू शुड वेट एंड गेट द बिग प्रॉफिट. वो आपको वेट करना है, ऐसा नहीं कि छोटा छोटा कमाना नहीं है. ऑप्शन सेलर छोटा प्रॉफिट के लिए देखता है, आप मे बी एक बड़ा प्रॉफिट के लिए देख सकते हैं, बिकॉज योर विन एंड लूजिंग रेशियो इज 50-50 मे बी, और 51-49. Yes, my setup gives actually 60%. 60% of the times I'm profitable, and 40% my stop losses hit. But then Yeah. that trailing stop losses, that thing gives me a much high actually in the option trading, option buying. होता क्या है ना, I never book profit or never keep any target. अगर वो बढ़ते जा रहा है तो उसको बढ़ने दो. Lot many times on the expiry day 3 PM move 20 रुपए का 150 रुपए में भी बेचा है मैंने. What I do is, for all the listeners, for all the followers, for your information, if you're a buyer, expiry के दिन वाला 3 PM का move, please try to guess that move. होता क्या है ना, उसमें रिस्क थोड़ा ज्यादा है, but then see, option buyer, we are here to take the risk only. But if your risk management is in the place और वहां पे एक अच्छा ट्रेड बन जाए तो you can earn in multiples. आपको हफ्ते में 2-3 ट्रेड करने की ही जरूरत है. बाकी ऐसे रोज ट्रेड करते बैठो, रोज मार्केट देखते बैठो, उसकी भी जरूरत नहीं. दिस इज द एडवांटेज ऑप्शन बायर्स हैव इन माय ओपिनियन, कि आपको हर टाइम फ्रेम में ट्रेड करने की जरूरत ही नहीं है. यू हैव दैट फ्लेक्सिबिलिटी.
Wednesdays and Thursday, I believe, make the most for option traders, option buyers. And that can be with the Nifty or Bank Nifty, right? Mostly Nifty, because Bank Nifty, Nifty moves are yes, Nifty. So any new trader should start his trading with the Nifty. I believe they should start in Nifty, because Bank Nifty has only 10 or 11 stocks, and HDFC and ICICI, they have like 25-20% weightage. So these two stocks move a lot, and Bank Nifty is very volatile to base. So I think Nifty, yes, Nifty has 51 stocks. So Nifty, there is some comparatively less volatility on the expiry day or otherwise. So any new trader should start in Nifty only, not even stocks, because stock picking is not the easy business. It requires a lot of expertise, lot of data reading, lot of conviction, and conviction will come only with experience. Believe me, guys, I'm here in the market since last 15 years. First 8 years मैंने पैसों का माती ही किया है. बहुत ज्यादा पैसा मैंने मार्केट को दिया. I have given lot of fees to the market. I've learned it very hard way, but nowadays lot of informations are available, lot of things are available, so you can avoid that hard landing, and you can have your trading process or trading career very smoothly. But then if you follow these three things, understand my things, only three things, if you follow discipline, if your risk management is in the place, and if your execution is very strong, very fast, there is no place for any of the emotions in your trading. You can do wonders. बहुत सारे लोगों के साथ वही होता है कि मतलब लॉस बुक ही नहीं कर सकते. Please try booking the losses also. One very important thing I would like to tell everybody, see guys, two ways. I'm not going to paint the rosy picture about option buying. See, if you take it other way, it is a black hole. आप जितना पैसा डालोगे खींच लेगा मार्केट, जितना भी डालो आप खींच लेगा. And at the same time, you consider it as an ocean. अपने को एक ड्रॉप चाहिए डेली, बस एक ड्रॉप मिल गया, अपनी लाइफ सेट. डोंट एस्पायर फॉर ऑल द ओशियन, तो वो डुबा के लेगा अपने को. सो दीज आर द थिंग्स आई थिंक पीपल शुड अंडरस्टैंड व्हाइल डूइंग ऑप्शन बाइंग. Risk reward is awesome, risk reward is very favorable, but you need to get your emotions in control. एक thing होता क्या है ना, जब आप लोग पेपर ट्रेड करते हो, everybody would have experienced, पेपर ट्रेड में आपका विनिंग रेशियो is almost 90 to 95%. Why that? Because your emotions are not involved. But when you actually trade, तो वो उसमें emotions involved हो जाता है, and then failure ratio becomes 90 to 95%. And this is the true story. तो इसके वजह से कीप योर इमोशंस इन चेक. अगर आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो, बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं एरोगेंट हो, बहुत ज्यादा एंगर है आप में, यू कैन नॉट डू द ऑप्शन बाइंग. देन यू कैन गो फॉर other things. Then options is not for you. Please understand this also. Right. Amit, we are running out of time. I think this is the time to end the session. Maybe we have another 2-3 minutes we can spend. Manas, do you have any questions? You can ask those questions. One question I had, like, what is your opinion on like having a hedge trade? Since you said you take only naked positions, so if you have an overnight position, so what is your opinion on having a hedge trade, like sell position in the like opposite direction? This So, is like, for carry forward, Manas. You are asking carry for forward trades. Yes. yes. Carry forward में मैं क्या करता हूँ ना, मेरा basically this is very strict time on this. अगर लास्ट 2 दिन का प्रॉफिट मुझे हुआ है तो आई विल नॉट कैरी. जितना मुझे 2 दिन में प्रॉफिट हुआ उससे ज्यादा मैं कैरी नहीं करूंगा. तो मेरा रिस्क मैनेजमेंट कंट्रोल में आ गया. एंड दूसरी चीज, मैं तभी कैरी करूंगा जब पर्टिकुलर स्ट्राइक कॉल और पर्टिकुलर स्ट्राइक पुट इट इज क्लोजिंग एट और नियर डेज हाई, तभी कैरी करूंगा. तो ये एक आध बार 2 बार हफ्ते में होता ही है. दैट इज द ओनली टाइम आई विल कैरी, एंड अदरवाइज आई विल नॉट कैरी. और अगर कुछ गलती हो भी गया तो व्हाट वर्स्ट इज गोइंग टू हैपन इज आई एम गोइंग टू वाइप आउट माय लास्ट 2 days प्रॉफिट. तो मेरा रिस्क मैनेजमेंट भी प्लेस में. तो ये करके चलता हूं मैं. सो आई डोंट थिंक देयर इज द नीड फॉर हेज टू डू कैरी फॉरवर्ड आल्सो. Yes, great. So all the audience, I think you can start your trading with Nifty. If you're doing your buying, it's better to avoid in when you are starting with the trading. आप stocks को avoid कर सकता है. Go with the Nifty as suggested by Amit, and you can comfortably you can trade and keep your risk management
lose what you afford to lose. That is very important. ऐसा मत करो कि बहुत बड़ा लॉस नहीं करना है आपको. एफोर्ड कितना कर सकते हैं इतना ही लॉस करो. 2-3-4% आप लूज कर सकते हैं आपका कैपिटल पे. सो दैट कैन बी कवर्ड इन द नेक्स्ट ट्रेडिंग डे आल्सो, right? Yeah. So, and all the information what we have shared here, that is only for the educational purpose. So take it as a educational purpose and study, and then you can take your own decisions. Great. And I think there are many comments and questions are there. We are running out of time, so we are not asking those questions, but you guys can ask those questions to Amit directly, or I will also send those questions to him, so he may answer those questions on Twitter as a DM. Okay. Amit, it was a wonderful session, a very insightful session. Thank you very much for joining us. बहुत अच्छा लगा, बहुत सीखने को मिला हम लोगों को. एंड एक अच्छा एक रियल ट्रेडर एंड ऑप्शन बायर के साथ मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि मैं ऑप्शन सेलर के साथ बहुत इंटरव्यू किया है, बट ऑप्शन बायर के साथ थोड़ा कम है ऐसा कंपेयर टू. बट इट वाज अ वेरी नाइस इंटरेक्शन विद यू एंड इंसाइटफुल इंटरेक्शन. थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस. थैंक्स अ लॉट. Thank you, Peter. Same here. Thank you. Yeah. Thanks so much And for Manas, joining us. thank It you. was a wonderful session. Yeah. Thank you, Manas, for joining us and for your wonderful questions. Thank you, all the lovely audience. Thank you very much for joining us. Have a good weekend. Thank you very much. We'll meet in the next F&OP Charcha session. Thank you very much. Thank you all. Thanks, Amit.